हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर देवयानी एंड यू वाचिंग एपिस्टेसिस। तो आज बहुत दिनों बाद हम क्लास 12 शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एंड क्विक रिवीजन करेंगे द फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. सो यू हैव टू रीड द चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी book and also from any one of your reference book, particularly Truman's Biology, and this video is only a quick revisions. Okay, so after reading the whole chapter from your book, you can just only refer this video. This is a quick revision of the first chapter, CBSE class 12 biology syllabus के जो first chapter है, unit 6 के जो first chapter है, that is reproduction in organism, right? So let's get started. So in chapter 1, that is the unit is all about reproduction, and it has 4 different chapters. So this chapter first is reproduction in organism. ये general एक overview है about reproduction, ठीक है? That means reproductions कितने टाइप के होता है, why it is important. So ये chapter is like a general introduction of reproduction, right? So first thing is that what is lifespan. कोई भी ऑर्गेनिजम्स के लाइफ स्पैन कौन से होते हैं? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सो होल द टाइम इज कम अंडर द लाइफ स्पैन. Okay, so now in this lifespan, reproduction is very important. That means it is not a mandatory life process. ठीक है, ये ऐसा कोई life process नहीं है जिसके अलावा organism sustain नहीं कर सकते. ये ऐसा life process नहीं है, but it is very very important. Okay, so that's why reproduction is not come under life processor, important life processor, but it is a very important biological process in which an organism give rise to young ones similar to itself. ठीक है, सो उसके जैसा ही द ऑर्गेनिजम्स के जैसा ही सिमिलर कैरेक्टर्स वो पास ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में, ताकि वो इस वर्ल्ड में सस्टेन कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं. ठीक है, कैसे? हर ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि उनके जैसा ऑर्गेनिजम्स ये पूरे यूनिवर्स में रह जाए, सस्टेन कर जाए, सर्वाइव कर जाए. सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो व्हाट हैपन, दिस ऑफस्प्रिंग्स फाइनली ग्रो होगा. आफ्टर अ सर्टेन ग्रोथ दे विल बिकम मैच्योर, एंड आफ्टर बिकम मैच्योर दे विल प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. सो दिस इज लाइक अ साइकिल. बर्थ होती है कोई भी ऑर्गेनिजम्स का, ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद दे बिकम मैच्योर, एंड आफ्टर मैच्यूरेशन दे जस्ट मैच्यूरेशन के बाद रिप्रोडक्शन करते हैं, एंड आफ्टर दैट सब्सिक्वेंटली देयर लाइफ स्पैन विल कम टू एन एंड फाइनली डेथ होती है. ओके, सो दिस इज अ टाइप ऑफ साइकिल. Okay, so this another important role of reproduction is to generate generic variation. Why? Generic variation is very very important in creating or is very important in a view of evolution. ठीक है, न्यू कैरेक्टर्स और जो भी इनके जेनेटिक मेकअप है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप में वेरिएशन लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द चेंज्ड एनवायरनमेंट, और दे कैन जस्ट सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, राइट? सो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन भी फॉर्म होते हैं. ओके, सो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि डीएनए कॉपिंग, व्हाई डीएनए कॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट? सो ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग, जो भी टाइप के रिप्रोडक्शन हो उससे पहले दिस स्टेप इज वेरी मैंडेटरी, दैट इज डीएनए कॉपिंग और रेप्लिकेशन. सो ड्यूरिंग दिस रेप्लिकेशन प्रोसीडियर व्हाट हैपेंस, द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द डीएनए, अनदर कॉपी ऑफ डीएनए विल जस्ट रेप्लिकेट. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिजम्स के जो डीएनए से 1 से 2 बनते हैं, सो इट इज कॉल्ड डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम एरर्स में ऑकर, एंड इफ द एरर इज नॉट लीथल, अगर लीथल नहीं हुए, सो दिस वेरिएशंस कैन पास ऑन टू द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, एंड इससे धीरे धीरे न्यू कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, राइट? सो इवोल्यूशन इज नॉट अबाउट अ सिंगल वेरिएशन जस्ट कम टू द ऑफस्प्रिंग, इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस. सो जेनेटिक वेरिएशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन, राइट? नाउ दिस रिप्रोडक्शन कैन बी ऑफ 2 type, sexual reproduction and sexual reproduction, right? So in asexual reproduction, the main 2 points are single parent is involved, okay, and number 2 is it is
occur with or without gamete formation. Gamete formation हो भी सकती है, नहीं भी हो सकता है. In sexual reproduction, two parents of opposite sex are नीडेड. ठीक है, कोई दो ऑपोजिट सेक्स के पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. एंड नंबर 2, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल and female gametes. Okay, next is asexual reproduction. Now we have to talk about asexual and sexual reproduction one by one. So there are different means of asexual reproduction. We have to go through all these means one by one. Okay, so in asexual reproduction, offsprings are identical and also can have exact copies of their parent. ठीक है, why? Because asexual reproduction में बस एक ही parent involved होते हैं and the only method of getting new characters or variation is DNA copying method. Okay, so if ऐसा हुआ कि exact copy DNA replication के time कोई भी error नहीं हुआ, exact copy form हो गए, then the offsprings are called clone. Okay, then what happens, the clones are morphologically, that means physical, all the characters are same as एकदम ditto same होगी अपने parents से. So they are morphologically and genetically similar individual. Okay, parent and offsprings are morphologically and genetically similar individual. So in that case only we will call those type of offspring as clone. ठीक है, हर टाइम हम clone नहीं बोलेंगे. जब exact DNA copies form होंगे, then we can call it that offspring as a clone to the parents, right? So here singles, ये mainly कहाँ पे होता है, where it occurs, single celled organisms, simple organisms में होता है, because it is a simple method of reproduction. Plants and animals with relatively simple organization, इनमें होती है asexual reproduction. Next, in protists and monerans, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है, parent cell divides by mitosis and produce new individual. ठीक है, now in case of unicellular organism, cell division is equal to reproduction. Why? Because only one cell is present in the body of that organism, and cell division का मतलब क्या है, एक सेल से दो सेल प्रोड्यूस होना, right? So here also, so in case of unicellular organisms, इसमें एक ही सेल है, so ये सेल डिवाइड होना and reproduction होना is same to them. So that's why in case of unicellular organisms, cell division is equal to reproduction. Right, now there are different means of asexual reproduction. First one is binary fission or fission. ठीक है, fission is nothing but simple, the cell will split into two halves or more than two halves, just cell divide हो जाएंगे. Okay, but the same thing happens before splitting of the cell. What happens, DNA replication will be there, nucleus will divide into two, and then the cell will divide into two halves and new organism will form. ठीक है, सो बाइनरी फिशन जिसमें सेल डिवाइड होके बस ओनली दो हाफ में ही डिवाइड होता है एंड टू इंडिविजुअल विल गोइंग टू प्रोड्यूस, देन वी विल कॉल इट एज बाइनरी फिशन. ओके, सो इट ईच रैपिडली ग्रोज इनटू अ एडल्ट. ओके, एग्जांपल इज amoeba, paramecium. So all these are what, unicellular organism. And in case of multiple fission, what happens, one organism में subsequent division होगी, nucleus की subsequent division होगी, and finally बहुत सारे nucleus form होंगे, and then the cell split into more than two halves. Okay, and each half contains one nucleus, and finally बहुत सारे organisms इससे produce होंगे. Okay, so example is plasmodium. Plasmodium में multiple fission होती है. So okay, so this is the one type of asexual reproduction method. Now is fission. Next is budding. Okay, so what happens, it is an unequal division. इसमें small bud form होता है. What is bud? It is simple outgrowth. ठीक है, बॉल ऑफ सेल्स बनते हैं. सो दिस इज सिंपल एंड आउटग्रोथ, जो धीरे धीरे एक टाइनी ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करते हैं, एंड अप टू अ सर्टेन एज और अप टू अ टाइम पीरियड ये पेरेंट के साथ अटैच्ड ही रहते हैं. आफ्टर दैट पीरियड इट विल ग्रेजुअली डिटैच फ्रॉम द पेरेंट एंड दे जस्ट ग्रो एज अ सेपरेट इंडिविजुअल. Okay, so it occurs in yeast and hydra, but there are some exception also जिसमें ये parent organism से अलग होते ही नहीं है. Example is yeast. इसमें chain of cells हो जाते हैं. yeast में bud form करती है, वहां से new yeast form होता है, and they do not detach from their parent, so they just make a chain of cells in yeast. Apart from the sponges and corals, इसमें भी budding होती है जिसमें permanently अपने parent organism से कभी detach नहीं होते. Okay, so this is another type of a sexual reproduction method. So first one is fission, second one is budding,
Next, in under unfavorable conditions, we have to learn some exception. Okay, amoeba agar unfavorable conditions, so generally it just do binary fission, but under unfavorable condition they can form cyst. So what is cyst? It just withdraws its pseudopodia. What is pseudopodia? Finger like projection. amoeba का कोई fixed shape नहीं होता है, finger like projections they can form. So ये withdraw कर लेते हैं and finally secrete a 3-layered hard covering. एक hard covering form करते हैं, it is called cyst. So this process is called encystation. ठीक है, cyst formation को बोलते हैं encystation. And after that we will come to this slide again. So when favorable condition returns, जब favorable condition आ जाती है, encysted amoeba divides through multiple fission. ये multiple fission करते हैं, okay, and produce many minute amoeba और pseudopodiospore. ठीक है, pseudopodiospore. And finally the cyst wall burst out होते हैं and spores are liberated in the surrounding medium and grow up into many amoeba, right? So this particular type of reproduction is called sporulation. ठीक है, in case of amoeba it can happen in unfavorable condition जहाँ पे sporulation हो सकता है, right? Apart from this there are different type of asexual reproductive structures are they also there. Okay, so there are different asexual reproductive structures like zoospore, ये मोटाइल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कॉनिडिया, birds, gamules. So all these are asexual reproductive structures. Okay, through forming this type of structure reproduction can happen. Okay, next is in animals and other simple organisms हम इसको बोलते हैं asexual reproduction. But in plants we can also use a particular term called vegetative reproduction, right, or vegetative propagation. So this word is mainly used for plants. So it is again a type of asexual reproduction, but it's only happen in plants, and there are some units of this vegetative reproduction. They are called vegetative propagules. So what are these? Runner, rhizomes, sucker, tuber, offset, bulb. So all these are vegetative propagules. So example of vegetative propagules, potato tuber. ठीक है, potato tubers में क्या होता है, इसमें nodes होते हैं, potato eyes होते हैं, वहां से under favorable condition new organisms grow करते हैं. So these are a type of vegetative propagation. Rhizomes in banana and ginger, etc. So these are also, so new plants arises from the nodes present in the modified stem. So potato tuber is a modified stem. So वहां से new organisms grow कर सकते हैं, right? Another method called fragmentation. So what happens in fragmentation? The body breaks into different distinct pieces or fragments, and from each fragment new organism will grow. So what is the difference between fragmentation and fission? दोनों सेम ही बताया मैंने. Fission में भी cell divide होकर different parts में divide हो जाएंगे and उससे new organisms grow होंगे. Main difference is fission, we will call it fission when it is an unicellular organism, and we will call it fragmentation जब हम simple multicellular organisms में ऐसा fragmentation हम बोलेंगे, right? So these are different types of asexual reproduction method. And so in case of potato, tubers are there. So these again a type of vegetative propagation. इसमें nodes जब damp soil and water के contact में आते हैं, they will produce roots and new plants. Another example is adventitious birds. So bryophyllum, a particular type of organism जिसके leaf margin से adventitious roots निकलते हैं, and these roots when touch the soil they will form the new organism, right? So all the simple organisms mainly done reproduction by asexual means, and algae, fungi shift to sexual reproduction just before the onset of adverse condition. So जब adverse condition होती है तब ये sexual reproduction करते हैं, otherwise asexual reproduction is well good enough, right? In higher organisms, कोई हायर प्लांट्स में क्या होता है, असेक्सुअल सेक्सुअल दोनों मेथड फॉर्म में रिप्रोडक्शन हो सकती है, एंड इन केस मोस्ट ऑफ द एनिमल्स विल डू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? नाउ वी विल गो बैक टू दिस स्लाइड.
So here is some example of different type of asexual reproduction. So this is fission, so this is amoeba, this red one is nucleus. So before a divide, the nucleus will become two. Now the cell divides and finally two organism will going to form. This is binary fission. This is cyst, this is a budding. That means in case of yeast, this type of birds will grow and finally this bird will mature to a mature or yeast cell. Now this is potato tuber, for ये potato eyes हैं जिससे new organism grow करेंगे. This is zoospore, asexual reproductive structure, right? This is gammules and this is bryophyllum जिसमें adventitious roots हैं. इसके leaf margins में adventitious roots form होते हैं. And this is hydra, hydra में small bird form होते हैं. So these are all different types of asexual reproduction. And what are important advantage of asexual reproduction? They are very fast process, only one organism is needed, okay, and it can form a number of offsprings, like in case of multiple fission or spore formation. So spore formation is another type of asexual reproduction method, like it occurs in fungi. Okay, fungi में क्या होता है, spore form करके asexual reproduction होती है, and all the spores are protected inside a particular structure called sporangium, right? Next, regeneration. This is another type of asexual reproduction जिसमें regenerate हो सकता है. Planaria, Hydra, कोई भी body part cut होगी वहां से full body regenerate हो सकती है, right? So this is true for only simple organisms, not true for any higher organisms. So these are different type of asexual reproduction, and they have they have some advantages, but the big disadvantages is new characters or new variations will not going to form. Why? Because only one parent is involved and variation can happen, but it is a very slow process comparing to sexual reproduction, right? Next come to sexual reproduction. So sexual reproduction में कुछ कुछ events बहुत ही common है. What are these events? First one is involves formation of male and female gametes either by the same individual both different types of gametes form कर सकते हैं, or by different individual of the opposite sex. ठीक है. Number 2 event is fusion of gametes. Gametes की fusion बहुत important है, जो होनी है in sexual reproduction. Next, it is a very elaborate, complex and very slow process, right? And it needs energy, okay, as compared to sexual reproduction. And because of fusion of male and female gametes, the offsprings are not identical to their parents, because इसमें new दूसरे partner का भी characters आ जाते हैं, okay, so they are not identical to the parents or themselves, that means siblings may be, okay. So these 4 events are present in any type of sexual reproduction, right? So the sexual reproduction may be done by different type of organism, but some features or some phases are common in all type of organism. What are they? Number 1 is juvenile phase. Okay, so there are some common features. So number 1 is juvenile phase. That means organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life to reproduce. Reproduction से पहले एक certain growth होनी है, ठीक है. So this is called juvenile phase or period of growth. It is also, this juvenile phase is also called vegetative phase in case of plants, and this is variable in different organism. अलग अलग organisms में this juvenile phase की time period different होगी, right? Now end of juvenile phase, जब से reproduction कर सकते हैं, they become so mature so that they can reproduce, the phase come, it is called reproductive phase, right? And ये reproductive phase भी बहुत variable है, right? So like in case of plants, अगर annual और biennial plant हुआ जिसमें flowers साल में एक बार या 2 बार आते हैं, तो we can clear cut it, there are some vegetative and reproductive phase. ठीक है, हमें पता चलता है कि this time when flower come, it is in a reproductive phase, right? But in case of perennial plant, it is very difficult to identify now the plant is in vegetative phase or in reproductive phase, right? Like example in bamboo, what happened? Flower comes once in their lifespan, that is in 50 to 100 years.
So it is very difficult to identify whether they are in vegetative or reproductive phase. Next is Strobilanthus kunthiana. So this type of flowers occur once in 12 years. 12 years में एक बार ही इसमें फ्लावर आए हैं. So it happens in 2006 जहाँ पे साउथ इंडिया में इसके पूरा ब्लूम हुआ था. So this flowers comes only in 12 years. So इस टाइप के प्लांट्स में ये डिफरेंशिएट करना बहुत ही डिफिकल्ट है. नेक्स्ट इन एनिमल्स. सो इन एनिमल्स बर्ड्स जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं दे ले एग्स सीजनली, बट इन कैप्टिविटी लाइक इन पोल्ट्री वी हैव दे कैन बी मेड eggs or can be made to lay eggs throughout the year. ठीक है, हमारे इकोनॉमिक नीड के लिए हमने उनको ऐसे चेंज कर सकते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स. ओके, अगेन फीमेल ऑफ प्लासेंटल एनिमल्स, प्लासेंटल मैमल्स. प्लासेंटल मैमल्स मीन्स व्हाट? The mammals which have placenta. So they exhibit some reproductive cycle. ओके, उसमें उनमें रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं. सो व्हाट आर दे? सो इन रिप्रोडक्टिव साइकिल्स देयर आर सम चेंजेस इन ओवरीज, ओविडक्ट एज वेल एज इन हार्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज. सो प्लासेंटल मैमल्स में रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं जिसमें ओवरी की मॉर्फोलॉजी चेंज होते हैं, स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, हार्मोनल चेंजेस आर देयर, राइट. सो इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक एग्जांपल ऑफ काउज, शीप, रैट, डियर, सो दे आर ऑल नॉन प्राइमेट मैमल्स, राइट. सो इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ईस्ट्रस साइकिल. Estrous cycle. O is silent here, so we will call it as estrous cycle, right? Now in primates, like in case of monkeys and apes and human, we will call this type of reproductive cycle as menstrual cycle, right? So this is all about this video. Now this is only a part 1 of this video and we will continue this in the next class. Okay, so we can manage another slide. Okay, so in many mammals, those living in natural habitat, जो natural habitat में रहते हैं, so they exhibit such cycle, that means reproductive cycles in only during favorable season, right? So in their reproductive phase, so these type of animals or mammals called seasonal breeders. And as there are some animals they are reproductively active throughout the year, so we will call them as continuous breeder. ठीक है, seasonal breeder जो favorable condition में ही जिनमें reproductive phase आते हैं, and continuous breeder जो throughout the year reproductively active रहते हैं. Right? Now in both plants and animals, hormones play very important role in sexual reproduction or regulation of this reproductive phase. Right? Now there are some events which are very common to different type of organisms, those who reproduce through sexually. Okay, sexual reproduction में कुछ events हैं जो सब organisms के लिए same होते हैं. Common events are there in sexual reproduction and we will talk about them in the next video, that means part 2 of this video. So if you like my videos, please go through my other videos also and just see the next part 2 of this quick revision video of chapter 1 in class 12 biology. Okay, till then take care and goodbye.